Hi everyone. So we are going to looking into starting the orientation in couple of minutes itself. So we will be starting in 2 minutes. So just hang on. We will be beginning very shortly. Just stay put. We are waiting for some more of you guys to join.
Hi guys, so let's begin with the orientation. So, first of all, hi, I am Krishna. I'm one of the co-founders of IOSD, and I started IOSD when I was back in my first year itself. Now, I have graduated from computer engineering from DTU itself in 2019, and I'm just here to interact with you guys, have a basic idea that what IOSD is, what we actually thought while we were starting the organization, and how it's going to actually help you guys into going further into what we have plans for you in the future, as well as what it should do for you and how you can make your career around it. So we also have one of the recent graduates, Ekansh Gupta over here, who graduated last year itself, and he's currently working, and he will be giving his own introduction with himself. So let's start with what is IOSD and what it actually means and where it did began. Okay, we'll be keeping this orientation in English so that it is an easy interaction for me as well as you guys as well. So when I'm talking about our evolution, okay, so it's very simple. So it's a story where we were people like you only. So let me just put it in this way. So आज तुम सब कॉलेज आए हो, तुम सब बिल्कुल एक सोसाइटी की तरह देख रहे हो कि हाँ, मेरे को कोई सोसाइटी ज्वाइन करनी है, मेरे को कुछ ना कुछ काम करना है, ठीक है. So we created a WhatsApp group at that time named as Android Techies. Nothing more than a WhatsApp group. हम लोगों ने बोला ठीक है, तेरे को भी एंड्रॉइड करना है, मेरे को भी एंड्रॉइड करना है. इट्स समथिंग दैट इज वेरी अपकमिंग एट दैट टाइम. चल आजा, हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम सारे एंड्रॉइड डेवलपर्स मिलके कुछ काम करेंगे. वहां से हमने चालू किया था, से आज हम लोग आईओएसडी पे पहुंचे. तो ये एक छोटी सी स्टोरी है. इट बिगैन विद अ स्मॉल एंड्रॉइड ग्रुप. इसके अंदर हम लोगों को था कि यार कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ काम करते हैं. सो हमने एक्चुअली ये किया कि वी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर प्रोजेक्ट्स एट दैट टाइम. सो हमारा ये एम था कि हम जाएंगे, हम प्रोजेक्ट्स करेंगे. हमने सब एंड्रॉइड डेवलपमेंट तो सीख लिया है, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कोई कोचिंग जा गए हैं या हम कोई कोर्स करके सीखे हैं. हम लोग सिंपली जो हर एक नॉर्मल इंसान करता है, व्हाट वी डिड एट दैट टाइम was that we went on YouTube and watched some YouTube videos, and we were like, oh my god, know everything. Now let's go and make these Android applications that we can. So वहां से हमने चालू किया था. From that position we went to one of our profs, Dr. Shailesh Mani Pandey. So he said, okay, तुम्हारे को एंड्रॉइड डेवलपमेंट आती है, so let's go and you should pitch this particular thing, your skills, to someone who can help you get some project on it. So he referred us to one of the people in Delhi police at that time, and he said these are the kids who really know android development and they're very fascinated about it, so you should give them a project so that they can improve on their learning, as well as you can get out some project that you wanted to get onto. And at that time we didn't know shit. Okay, we just had seen YouTube videos and we were like, oh my god, we know everything, हम सब आता है, अब हम सब बना लेंगे. We went over there and realized, okay, we don't know shit. We wanted to learn, we had the experience of watching YouTube videos, but the actual software development is not just looking into YouTube video and creating a project. So at that time, we were only Android developer, but we realized to create the particular product, we needed a particular person who is capable with front end web development, back end web development, as well as someone who needs to have access between all these technologies. So it was something that was not going to be done by a single person at that time, or a single person with a single skill set. That we were the Android techies. So we realized, okay, for software development to work out, we need to expand our group, and we expanded our group at that time. And further, that group led to an official society in the society in the college that we opened in our second year starting itself. That was Software Developers DTU. Not the form that we all have today, but it was the first step that we have at that time, that we have created a group where everyone from different technologies is there. He's going to help out students to learn, interact, work on different projects, and we started working in that moment. We delivered that project with a delay. Obviously, we had to learn, we had to go on, and then we pitched the product, and it was named as Aapka Update. If it was a FIR tracking application for Delhi Police at that time. So we were delivering projects from our state of inception itself to a high state clients.
Further, we moved on to creating of IOSD. So it is a simple story, but I'll be telling you that later how we actually switched from SDD to a small society in a college to a organization that is currently in more than 24 colleges, and we are looking forward once the pandemic is over to further expansion. So right now we are have a lot of people from different colleges joining together in IOSD, and it's not just a society where you join together for normal expansion or normal career growth. It's where you become a professional developer and manager from coding enthusiasts. Currently, I am pursuing my master's program of MBA from IIM Bangalore, and I'm already being selected as product manager for Samsung, whereas Ikansh is already working for Zeta. So we are over here as professional developers and managers, and we started off just like you guys. एक छोटी सी स्टोरी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह स्टार्ट होती है, जहां मैंने तुम्हें बताया एक व्हाट्सएप ग्रुप बैठ के हम लोग सोचे थे कि हाँ हम डेवलपमेंट करेंगे, एंड आज की डेट में मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, एकांश एक प्रोफेशनल डेवलपर है. So we are here to give you an idea कि how you make this story come true and how you go on in your life and bring this out. ठीक है, यही है आज हमारा स्टोरी, हाउ यू एक्चुअली डू दीज थिंग्स, rather than कि हाँ मेरी सोसाइटी में 5 चीजें मिलती हैं. एवरीवन विल टेल यू, हर कोई आएगा भाई, IEEE आएगी तुम्हारे पास, SR आएगी, साथ ही साथ साले दो नॉन टेक सोसाइटी वाली भी आके बोलेंगे हम भी टेक की कोडिंग सिखा देते हैं. It is not what everyone should go at for. When you are looking for IOSD, is something that is unique that we are offering for continuously at such a long time, and that is a product that you should look for when you are joining IOSD. It's something that is not such uniqueness, not such boring that we will be having just the classes, we will be having the interactions only. We have a set of skills that we are certainly different for, and that is what is the aim, to tell you what IOSD is different and how we are making you professional developers and managers constantly throughout your career life. So we always promote that we are working in a team. That is the most important thing that we have constantly been doing. पहली कहानी एक व्हाट्सएप ग्रुप से चालू होती है, वहां भी टीम की तरह काम होता है. आज भी हम टीम की तरह काम कर रहे हैं. तुम्हारे सामने एक 2 से 3 साल सीनियर पास आउट है, एक सामने एक जस्ट इमीडिएट पास आउट सीनियर है. सारे के सारे तुम्हारे जितने भी कॉलेज के अंदर सीनियर्स हैं, 3rd ईयर 4th ईयर, वो भी आ जाएंगे. हमारी टीम कभी खत्म नहीं होती है. हम कॉन्स्टेंटली टीम की तरह काम करते रहते हैं, चाहे अभी हम पास आउट हो गए हों, हम कॉलेज में हों, हम कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन है. इट्स एलुमनाई बेस्ड इंटरेक्शन, इट्स नॉट अ नॉर्मल जेनरिक इंटरेक्शन कि हाँ बस आए और फर्स्ट ईयर आपस में बात करके चले गए. Simple interest groups, everyone has theirs, and it's special interest groups for us. So in this we are particularly going to have classes. Okay, हर कोई कहता है हम क्लास करते हैं, हम क्लास बताते हैं कि how to do, what to do. So this is what is moreover here. But इसमें सबसे important चीज हमारे पास यही होती है कि हम लोग तुम्हारे को सिर्फ एक क्लास नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हारे को ग्रुप्स में इंटरेक्ट करा रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एकांश, मुझे, आयुष को मिलके एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है, तो हम लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं साथ में. इट इज नॉट जस्ट कि हाँ भाई तुम लोग आओ और तुम्हें सिर्फ क्लास मिलेगी एंड तुम वीडियो देख के चले जाओगे. इट्स नॉट दैट. वी हैव लाइव स्ट्रीम क्लासेस. ऑलरेडी पहले हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी, बट जो हमारा कोविड का प्रोटोकॉल चल रहा है, लाइव स्ट्रीम इज द ओनली वे दैट इज गोइंग, दैट इज बीइंग डन. एंड हमारी कॉन्स्टेंटली वेकेशंस में भी होती हैं. एंड हो तुम देखोगे तो यूट्यूब पे भी रिसेंटली हमारे रिसेंट एलुमनाइज ने भी क्लासेस ली हैं, जो आज की डेट में डी शॉ में हैं, माइक्रोसॉफ्ट में हैं, उन सब ने वो क्लासेस ली हैं फ्रॉम IOSD D2 इटसेल्फ. एंड वो सब भी तुम्हारे को देखने को मिलेंगी सारी लेक्चर्स, जिससे वो लीडरशिप की स्किल्स तुम में आते जाए, साथ ही साथ नॉर्मल स्किल्स फ्रॉम योर 2nd ईयर 3rd ईयर सीनियर्स भी तुम्हारे को कॉन्स्टेंटली मिलती रहेंगी. वी नो द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री. यार हमने स्टार्ट से ही बोला कि हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली मेरे को अगर कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप मेरे को प्रोजेक्ट दे रहा है, या कोई मेरे को एक PSU ऑर्गेनाइजेशन मेरे को एक प्रोजेक्ट दे रही है, सो वी कॉन्स्टेंटली नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. एंड साथ ही साथ व्हेन यू हैव alumni who have been working in the industry for a couple of years, they know what is actually being done in the industry. So तुम्हें जब कोई पूछेगा कि
व्हाट शुड आई डू भैया, भैया मैं क्या करूँ? तो हर कोई रैंडमली होगा, हाँ एमएल कर ले, एआई कर ले, बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे पाइथन कर ले, सभी चल रहा है। ठीक है? सो ऐसे हवा-हवा की बातें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे को जब हमारे साथ इंटरेक्शन होगा, तो इट वुड बी मच मोर बेस्ड ऑन ओके दिस इज़ द करंट रिक्वायरमेंट दैट इज़ गोइंग टू रिक्रूट यू फर्दर एंड दिस इज़ द करंट रिक्वायरमेंट दैट वी आर लुकिंग इन प्रोजेक्ट्स। एक ओपनिंग के अंदर भी किस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए होता है, वो तक अलग-अलग होता है। इट्स नेवर कि हाँ भाई सबने एआई कर लिया, एआई की गधों की तरह भर लिया सबको। ठीक है? सो दैट इज़ द नीश लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दैट वी हैव एंड व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट वी आर डूइंग एट द करंट मोमेंट एंड प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट्स डूइंग डूइंग दैट सो। ठीक है? ये नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए बता दिया। तुम्हें क्या करना चाहिए उसके अंदर प्रोजेक्ट भी हम ही तुम्हारे को दे रहे हैं। एंड इफ यू आर वर्किंग एट अ हायर लेवल, वी आर गेटिंग यू स्टाइपेंड फॉर वर्किंग इन दीस प्रोजेक्ट्स एज़ वेल। हमारे पास यार हमेशा मेंटर्स के अंडर हम लोग काम करते हैं। सो इवन आईओएसडी गिव्स यू इंटर्नशिप्स फ्रॉम आवर ओन सिस्टम इटसेल्फ। वी आर वर्किंग विद डिफरेंट स्टार्टअप्स, सो वी गिव देम डायरेक्ट इंटर्न्स एंड वो सारी पेड इंटर्नशिप्स होती है। ऐसा नहीं कि चलो हम फ्री के बच्चे तुम्हारे को दे रहे हैं, आ जाओ तुम चिल करो भाई। नथिंग लाइक दैट। इवन people on this call had worked at IOSD. Even Dave was over here. Dave is in fourth year. He's currently working at Flipkart for 6 months. But उसने भी आईओएसडी के साथ इंटर्न करी थी अपने सेकंड ईयर में टू स्टार्ट हिज करियर। सो everyone has their own idea of how to build their career, but IOSD has been pushing constantly कि हाँ हमें आगे कैसे बढ़ाना है, अपने ही स्टूडेंट्स को, अपने ही लोगों को आगे कैसे हेल्प करते रहनी है। सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एट दिस मोमेंट इन यू गाइस। फिर मैं फटाफट सब मेंबरशिप पोर्टल के आसपास तुम्हारे को बता देता हूँ। मेंबर पोर्टल के अंदर तुम्हारे को सारे इवेंट्स की डिटेल्स मिल जाती है, लेक्चर्स एंड प्रोजेक्ट्स जो भी हमारे हैं उन सब का डेटा मिल जाता है, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका आइडिया लग जाता है। यू कैन लुक एट योर सीनियर सीवीज, इस तरीके से कुछ कुछ डेटा तुम्हारे को उसके ऊपर मिल जाता है। यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द मेंबर पोर्टल बाय लॉगिंग इनटू आईओएसडीज वेबसाइट एंड जिस आईडी से और पासवर्ड से तुम रजिस्टर करोगे, यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ द मेंबर पोर्टल एज वेल। बट हमारा यूएसपी क्या है? ठीक है, एक मेंबर पोर्टल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको किसी और सोसाइटी में तो नहीं मिल रहा। बट हम लोग कैसे अलग हैं सबसे, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। वी आर वन ऑफ सेमी टेक सोसाइटी। ठीक है, बहुत सारी सोसाइटी है जो कहते हैं हम लोग भाई नॉन टेक है, टेक है। हम 50-50 दोनों के अंदर काम करते हैं। हम लोग इंडियाज लार्जेस्ट हैकाथॉन करा सकते हैं कॉन्स्टेंटली 2 साल लगातार। तो हम लोग जब ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं कोई इस बड़ी लेवल पे चीज के, तो हमें नॉन टेक की भी उतनी लेवल की स्किल्स मिलती हैं। जब मैं अपने बात से बोलता हूँ कि मैंने ये इंडिया लेवल चीज कराई है, तो अपने आप ही मेरे सीवी को जो बूस्ट मिलता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज सेमी टेक सोसाइटीज हेल्प दैट यू कैन गेट। हम कॉन्स्टेंटली इवेंट्स कराते हैं, हम कॉन्स्टेंटली हैकाथॉन्स करा रहे हैं, कोडिंग कॉन्टेस्ट करा रहे हैं, लेक्चर्स करा रहे हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग दीज थिंग्स गिव यू दैट एज। एंड तुम्हारे को देखो अपना प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, बट प्रोडक्ट पिच करना भी इक्वली आना चाहिए। अगर मैं आज तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे आके, तो दैट इज माई फेलियर। अगर एकांश तुम्हारे को अगर थोड़ी देर में नहीं बता पाएगा व्हाट एक्चुअली आईओएसडी इज डूइंग, so that is his failure at this particular moment. So I've done a plethora of projects. I will take this and then सिंपली मैं तुम्हारे को इंटरेक्शन से बताते जाता हूँ कि किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। दिस इज द प्रोजेक्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट एंड वी हैव निखिल पांडे ओवर हियर। ही इज currently working at Amazon Berlin and he was one of the co-founders of IOSD and he's still working with IOSD and still working with on projects with students and currently looking for some people in working into a startup of his own that he's looking forward to at this moment. So you can look at the opportunities that you have. जर्मनी के अंदर तुम्हारे सीनियर्स हैं जो को फाउंडर हैं, they have been working at this level. So these are the projects. It was a FIR tracking application we created at that time. This is a mental health application that we have created in the pandemic itself. Then we have a feedback portal for Arunachal Pradesh Police. It's not just Delhi Police that we have interacted with. We have created a fitness training application for a startup itself. So ये जितने भी projects हैं, कोई startup के लिए है, कोई organization के लिए है, as well as we created a tracking application for various policemen and their vehicles in Delhi Police itself. And we created an internal service channel for a United Nations organization. ये सारे projects जो हैं, ये सब हमने इसलिए बनाए, ये सारे काम किए टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट इज एक्चुअल प्रोजेक्ट लाइफ लाइक। एंड दिस इज अ स्मॉल वे ऑफ टेलिंग मी कि आईओएसडी इज नॉट जस्ट अबाउट सॉफ्टवेयर 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 सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारे पास हार्डवेयर की भी उतनी ही अच्छी स्किल्स हैं एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट हार्डवेयर विद बेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर भी हमारे को आता है। एक छोटा सा वीडियो है, इसके बाद मैं तुम्हारे को बताता हूँ एग्जैक्टली क्या करते हैं ये चीज।
a small video. So it's giving a basic idea कि हमारा क्या एक्सपर्टीज है. वी हैव क्रिएटेड अ ऑटोनॉमस सर्विलेंस रूम. ऑटोनॉमस से मतलब है ये अपने आप सारे काम करता है. तुम इसे बोलते हो यहाँ जाओ, वो करो, उसको देखो, वहां पे आओ. दैट इज व्हाट इट इज डूइंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. And we delivered this drone to Delhi police while the farmer riots and the were going on in the last year. They used this particular drone in the borders of the Delhi and to check on the length of the hole कि कितनी end तक वहाँ पे लोग हैं, क्या काम है, where they could actually not go. It was autonomous drone. So इसके अंदर भी काम से भी ये नहीं होता कि हाँ हमारे को सिर्फ ड्रोन असेंबल करना है एंड बनाना है. We had the work in which you had to code through the whole software, and it's not a project that was delivered only by DTU guys. ठीक है, इसमें IOSD NSIT के भी बच्चे काम करते हैं, DTU के भी करते हैं, IIT DTU के भी करते हैं, इवन महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, BPIT सबके बच्चे काम करते हैं क्योंकि IOSD is available everywhere and the talent that we have in every of these colleges is mammoth. तो हम लोग बेस्ट लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं who have been working in projects and give them the special projects. So आप धीरे धीरे हमारी रैंक्स में से ऊपर बढ़ता है. ऐसा नहीं कि आपको डे वन पे ही सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. I will other various projects as well. But now I'm passing on mic to Ekansh over here. He can take forward from this what we have been doing for a long time and what we are looking for at this particular moment, and a simple story of how Hack Did You started and how it was being organized at that time and how it actually led to creation of IOSD at the first Hack Did You. So it's a small story, it's a fun story. I feel that Ekansh can take forward from here, and if need be, I'm always here with him. Hi everyone. So I am Ekansh Gupta and I am working at Zeta and I am in Bangalore right now. Fun fact, Krishna भी अभी Bangalore में and I am graduated, but ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि if I want कृष्णा भैया हेल्प या कोई और सीनियर का हेल्प तो वो मुझे ना मिला. तो जैसे कृष्णा भैया said कि we are active after graduating as well. तो दैट इज पर्टिकुलरली ट्रू बिकॉज हमारा हर दूसरे दिन इंटरेक्शन होता ही है एंड ऐसा नहीं है कि मेरा सीनियर से इंटरेक्शन होता है, मेरा जूनियर से भी इंटरेक्शन होता है. सो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. चलो लेट्स स्टार्ट विद हैक डी2 एंड द इंसेप्शन ऑफ आईओएसडी. सो आई रिमेंबर अ डे जब मैंने ज्वाइन किया था आईओएसडी. दैट वाज 2017. आई जॉइंड कॉलेज इन 2017 and join करते ही we got to know that there is the society called IOSD, SDD2. What happened there was कि we had this aim just because I was there just joining तब तो मेरे पास आइडिया नहीं था, but the whole team had this aim to make this big event called Hack D2 and make this the biggest hackathon in the whole country, right? तो we started with this path. हमारा पूरा का पूरा अगस्त में स्टार्ट हुआ था, सारा प्रिपरेशन सब कुछ स्टार्ट अगस्त में हुआ है. हमारा हैकाथॉन वाज इन अक्टूबर. तो उस पूरे टाइमलाइन के ड्यूरेशन में वी वेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल, वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क. यहाँ पे हर बड़े इवेंट के लिए वी आर सेग्रीगेटेड इनटू टीम्स. सो इफ वी वांट मनी तो वहाँ पे स्पॉन्सरशिप टीम होती है, कॉर्पोरेट टीम जैसे कहते हैं हम लोग. मार्केटिंग टीम अलग होती है, हमारे पास ऑपरेशंस टीम्स अलग अलग होती है, टेक टीम अलग होती है. तो वी वर अ ह्यूज टीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हु वर डूइंग देयर जॉब. कभी हम लोग फेल होते थे, कभी बाकी टाइम पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होते थे. कभी पैसा मिलता था, कभी पैसा नहीं मिलता था, कभी हमारी डील्स होती थी, कभी मार्केटिंग सही जाती थी. कॉलेजेस के बाहर खड़े रहते थे जस्ट टू प्रमोट कि आने वाला है हमारा इवेंट. वी डिडंट नो कि इवेंट कितना बड़ा होगा. वी वर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट द बिगेस्ट इवेंट दैट D2 हैज एवर सीन एंड नॉर्थ इंडिया हैज एवर सीन. तो हुआ क्या है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि वी वेंट एवरीवेयर, हर जगह गए, हर कॉलेज में गए, हर फेस्ट में गए एंड वी स्टार्टेड प्रमोटिंग एंड एवरीथिंग. आवर टेक टीम वाज वर्किंग ऑन द होल हैकाथॉन वाला पार्ट. द नॉन टेक टीम वाज वर्किंग ऑन कि उसको पूरा सक्सेसफुल कैसे बनाना है. तो एट द डे ऑफ हैक डी2, 13 अक्टूबर को हैक डी2 है, क्योंकि मुझे ये याद है उस टाइम पे फ्रेशर्स था, हम फ्रेशर्स पे नहीं गए थे, हम हैक डी2 पे बैठे हुए थे. एंड हम हैक डी2 पे बैठे हुए हैं एंड हमारे जो कैपेसिटी है ऑडी की दैट इज अराउंड 800 पीपल. एंड
पता नहीं क्या हुआ, वो ओवरफ्लो होने लग गया एंड वी गॉट टू नो कि 800 से बहुत ज़्यादा लोग आ रखे हैं उस पूरे इवेंट के अंदर, राइट? आफ्टरवर्ड्स तो हमें ये पता चला कि दैट वाज नॉट ओनली नॉर्थ इंडियाज बिगेस्ट हैकाथॉन बट इंडियाज बिगेस्ट हैकाथॉन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. During the hackathon, one thing happened. A lot of colleges started to inquire about SDDTU and the culture that we had at DTU from Krishna Priyaga time. Ki what is going on? How come we are making this a big hackathon? How are we even developing, managing everything, right? So tab they wanted the same culture in their college and calling it SD Mate or SD NSUT or anything. But software developers NSUT, yeah, software developers Mate does not make sense. They do not come into the same umbrella. They do not come into the same collaboration. What happened then? This idea stuck in our mind, and later on, what we did was we wanted to start with expansion. We made ourselves a non-profit organization. We registered ourselves in the Indian government and we changed our names to International Organization of Software Developers. फिर हमारे पास ये आइडिया आया बिकॉज नाउ वी आर रजिस्टर्ड, वी कैन गो एंड स्टार्ट आवर कॉलेज सोसाइटीज इन डिफरेंट कॉलेजेस. दे विल बी ऑटोनॉमस बट स्टिल बी कनेक्टेड विद द नेम ऑफ IOSD, राइट? सो हमारे पास IOSD DTU उस टाइम पे सबसे बड़ा मेन ब्रांच रहा. हमने IOSD NSUT का इंसेप्शन किया उसी साल, हमने IOSD मेट का इंसेप्शन किया उसी साल, एंड आफ्टरवर्ड्स now in 2021 2022 we have a presence in over 24 colleges. So that is how IOSD came into the picture. That is how HackD2 became the biggest hackathon in India at that point of time. So yeah, let's move forward. Okay, so हमारे पास बहुत, या वी हैव पार्टनर्ड विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, वी हैव पार्टनर्ड विद अ लॉट ऑफ कंपनीज, वी हैव पार्टनर्ड विद कंपनीज लाइक ट्विच, माइक्रोसॉफ्ट. हमारे खुद के अलग से भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं. प्लेसमेंट्स आ गए एज अ पोर्टल वे यू कैन गो एंड कोड, यू कैन गो चेक आउट ऑल द कंप्यूटर नेटवर्क्स का थिंग्स, OS DBMS जो भी हमारे को चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट, वी कैन गो एंड चेक आउट प्लेसमेंट्स आ गए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो वी ऑर्गेनाइज अ लॉट ऑफ इवेंट्स. हमेशा हर समय इवेंट्स चलते रहते हैं हमारे, टू प्रमोट कोडिंग एनवायरनमेंट, टू प्रमोट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो सबसे बड़ा मंथली इवेंट होता है हमारा. तो मंथली इवेंट में वी हैव ऑल द कोडिंग वाला इवेंट्स, जिससे यू आर ऑन टिप टोज ऑफ ऑल द कोडिंग. फिर वी हैव इंटर्नशिप फेयर. सो एवरी पर्सन हियर needs to do at least 3 internships to get a placement. इट्स रिकमेंडेड टू गेट 3 इंटर्नशिप्स. वैसे तो कॉलेज ने मैंडेटरी बना रखा है. तो वो कैसे मिलेंगी? फर्स्ट ईयर में बच्चा इंटर्न कैसे करेगा, सेकंड ईयर में बच्चा इंटर्न कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ इंटर्नशिप फेयर्स एंड विद द हेल्प ऑफ IOSDs इन हाउस इंटर्नशिप्स, राइट? तो इंटर्नशिप फेयर्स में वी ब्रिंग आउट मोस्ट ऑफ आर ब्रांड कोलैबोरेशंस, वी ब्रिंग आउट आर मोस्ट ऑफ आर कंपनीज जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, एंड वी ट्राई टू ऑफर एवरीवन एन इंटर्नशिप हु हैज बीन टू इंटर्नशिप फेयर, राइट? फिर हमारे पास हैक DTU है. ऑब्वियसली आई टोल्ड यू अबाउट हैक DTU. हैक DTU हर साल एक बार होता है. फिर हमारी आफ्टर पार्टीज होती है. सो दिस इज अ PG-13 फोटो. हम पीछे का इस पे दिखा नहीं सकते. कृष्णा भी हमारे पास वो फोटो है क्या नेक्स्ट वाली इस चीज पे? इसमें नहीं डाली हमने. इसमें नहीं डाली है, ठीक है, ओके. तो ऑफलाइन होती अगर हमारी ओरिएंटेशन ऑडी के अंदर तो हम सारी दिखाते हैं, ऑनलाइन में हम नहीं दिखाते. तो ऑनलाइन में हम सारी फोटोज नहीं दिखा सकते, बट ऑब्वियसली बिकॉज हमने पूरा साल हमने काम किया होता है, तो वी नीड टू लेट आवर टीम ऑफ. कहीं ना कहीं हमें चिल करना होता है जाके. तो हम आफ्टर पार्टीज करते हैं. देयर आर पूल पार्टीज एंड ऑल. तो पूल पार्टीज है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि पूल पार्टीज में क्या क्या होता है. बट ये नहीं होता कि IOSD DTU सिर्फ वहाँ पे बैठा हुआ है. वहाँ पे सारे कॉलेजेस के लोग होते हैं. IGDTU, NSUT, मेट. अब मैंने इतने सारे कॉलेजेस का नाम ले लिया है तो थोड़ा सा खुद भी अपना दिमाग लगा लो. बट इट इज़ अ फन डे एंड बहुत मज़ा आता है. चलो नेक्स्ट स्लाइड. तो व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस दिस ईयर? तो सबसे पहली चीज़ स्किल डेवलपमेंट हमारा सबसे चीज़ होता है. हमने पहले ही बात की थी. IOSD इज अ सेमी टेक सोसाइटी. वी आर 50% टेक, वी आर 50% नॉन टेक. वी कैन गो एंड डेवलप आर स्किल्स इन एनी ऑफ द फील्ड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज IOSD इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ टेक सोसाइटी, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन वेरियस लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड. ठीक है.
You can start with C++, you can start with Java, you can start with Python, doesn't matter. हमारे पास हर लैंग्वेज के लिए ऐसा ही चीज़ होते हैं. Then we have Android development. So there is a big hype of development, web development, वैसे ही Android development होता है. तो हर चीज़ के लिए हम लोग काम करते हैं. तो now comes web development. वेब डेवलपमेंट में वी हैव जावास्क्रिप्ट एंड ऑल. फिर ग्राफिक डिजाइनिंग आता है. सो ग्राफिक डिजाइनिंग इज दैट पोस्टर वाला थिंग जो हम एडोब एक्सजी, फोटोशॉप ये सब में करते हैं, राइट. अभी सबसे ज्यादा हाइप इंडस्ट्री में जो है उसे मशीन लर्निंग की कहते हैं. किसी को पता हो ना हो, बट सबको मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना होता है. सो ऑब्वियसली वी हैव एक्सपर्ट्स हु आर देयर फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ होता क्या है कि फोर्थ ईयर में हर बच्चे को डीटीयू में रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने होते हैं. तो वी हेल्प इन पब्लिशिंग दोज रिसर्च पेपर्स. ठीक है, वो सारा रिसर्च कैसे होगा, वो पूरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वो कहाँ से हम डेटा ले रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों में हम हेल्प करते हैं. सो दैट वी हैव अ गुड रिसर्च पेपर का टॉपिक एंड द एंटायर डेटा, राइट. ओके, नेक्स्ट. Yeah, so this was one of my creations. So there is this thing called IOSD gaming. हमारा एक नया प्लेटफॉर्म था पूरा का पूरा. So IOSD gaming involved two things. One was gaming infrastructure and one was game development. तो gaming infrastructure तो अभी कुछ कर नहीं सकते because it's an offline thing. बट वी हैव दिस गेम डेवलपमेंट. सो गेम डेवलपमेंट दो बहुत बड़ी चीज़ों में होता है. एक होता है यूनिटी, एक होता है अनरियल इंजन. And one of the most famous and easiest to learn and start with is Unity. So we start with Unity based game developments, and we have a lot of people who are working with that. Now comes projects and internships. हमने ये सोचा कि यार प्रोजेक्ट्स बच्चों को कैसे मिलेंगे. तो हमें ये रियलाइज हुआ कि हम लोग एक्चुअली में खुद भी प्रोजेक्ट्स करते ही हैं. ठीक है, विंटर प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, समर प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, यूजुअली प्रोजेक्ट्स चलते ही रहते हैं. तो व्हाई नॉट इन्वॉल्व ऑल द पीपल इन आईओएसडी फॉर दोज प्रोजेक्ट्स. इफ प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ तो वी कैन गिव स्टाइपेंड एज वेल. So next comes hackathon and coding challenges. So we told about monthly challenges. वैसे ही हमारे पास mock hackathons होते हैं for internal IOSD के students. Now comes organize, मतलब SIGs and workshops तो नॉर्मल है हमारे लिए. हैक D2 से बात हो गई हमारी. लेट्स मीट आवर टीम. सो ओके, इज देव, वरुण हियर? कोई भी है यहाँ पे? Yeah, so basically we just want you to interact and know the faces of the people that you are going to interact on everyday basis. क्योंकि मैं और एकांश कॉन्स्टेंटली तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल है यहाँ पे कि हम यहाँ पे हैं. सो आई वुड लाइक देव और वरुण टू कम ऑन टू स्टेज एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट एंड इंट्रोड्यूस एवरी वन ऑफ द पीपल इन द सीनियर काउंसिल so that we have a basic idea of who everyone is and what kind of idea we have at this particular moment. And you can interact with these guys, get a well idea कि हाँ हम लोग किन के साथ बात करेंगे, कौन हमें कॉन्स्टेंटली सिखाएगा, कौन हमारे साथ इंटरेक्ट करेगा. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. So we are putting on the faces over here whom you can interact to and what are their backing at this particular moment. Where is Dev? He's not on the main stage yet, right? He is not on the main stage, he is in the backstage. Okay, let's have a minute. ओके, तो जब तक देव इज कमिंग तब तक एक और चीज़ बता देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे फोटोज ना कंपनीज के साथ इसलिए लिखी हुई हैं जिससे यू ऑल्सो गेट टू नो कि यार प्लेसमेंट भी अच्छी होती है. ठीक है, सो देव विल कम इन अ मिनट और सो देव विल टेल यू मोर अबाउट इट. So, but you can see our senior most council have 6 people where 2 people are from Google and 1 person is from Sprinkler. So हमेशा सही placement होती है और हर इंसान के पास जो मतलब member होता है, if they are interacting with seniors, if they are working अच्छा, तो they always find a good enough placement for themselves. हाँ जी यार, तो Google देखिए really. बेसिकली हमारा एम यही होता है कि वी हैव बीन विद द lucky with the placements constantly. So we always get the day zero placement at DTU every year. For constantly 4 to 5 years, I have seen this. Even Ikanshi's senior batch, even
My batch, every batch we have claimed the day zero, the -1 placements where the first person who is placed in D2 is always from IOSD. मेरे टाइम से पहले ध्रुव रामदेव सर हुआ करते थे, तो ध्रुव रामदेव सर ने डायरेक्टली डे ज़ीरो प्लेसमेंट ली थी। मतलब हमारा कॉलेज स्टार्ट भी नहीं हुआ था, समर वेकेशंस चल रही थी और डे ज़ीरो पे डीई शॉ आई थी एंड ही क्रैक्ड दैट। वी वर समवेयर एल्स, वी वर एक्चुअली हैविंग एन ओरिएंटेशन एंड हमें तब पता चला था कि डीई शॉ क्रैक हो गया। उस टाइम पे डीई शॉ 2 ही बच्चों को लेकर जाता था एंड इस टाइम पे भी शायद डी शो 2 ही बच्चों को लेकर जाता है। मेरे टाइम पे जब डी शो आया था डी डे ज़ीरो पे वो 2 बच्चों को लेकर गया था और दोनों के दोनों आईओएसडी के थे। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग फ्रॉम आईओएसडी टू माइक्रोसॉफ्ट। फिर अभी करंट प्रेसिडेंट वरुण इज प्लेस्ड एट एक्सपीडिया। A couple of people like Siddharth is placed at startup called Simple. मैं ऑफिस गया हूँ उसके, बहुत बढ़िया स्टार्टअप है। Then a couple of people from Flipkart, Dave is from Flipkart. Next, ठीक है, देन कम्स ऑल अमेजोन एंड ऑल। ठीक है, तो वी टॉक पहले भी कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी हमारी गई हुई हैं। तो अभी निखिल पांडे सर जो हैं वो बर्लिन में बैठे हुए हैं, अमेजोन बर्लिन। ही इज अर्निंग अ लॉट एंड लॉट इन यूरोस डायरेक्टली। ठीक है, सो नाउ मतलब कम्स लॉट हाउ का टू मतलब क्या ज्वाइन। होता है? 1.5 करोड़, 2 करोड़, दैट इज दी लॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. हाँ, And मतलब it's हर not इंसान just का him डी में only. यही We होता है। have we have Ashish as well. So the batch that started IOSD at this particular moment had four people at the inception in 2019 who graduated. Two of them are in Germany right now, earning 1.5 CR plus. One of them is me, who's here at IIM Bangalore in India's top institute, and one of them is Saksham. He is already the one of the co-founders of ISD, and he's working in a startup of his own with his equity. So there are a lot, and we have come together at ton of times, but still over here, as well as one of the co-founding members have been placed in JPMC recently, as well as other people are currently working for masters in Germany itself, all expense paid, scholarship paid. So that is how the team that graduated 3 to 4 years ago is faring at this particular moment. So you can enjoy, we can interact with us at every time. And at this current moment, we have people that are already after me. So like Ronak Sakuja is currently moving to US at this particular moment. He was the next president at that time. And we had Nikhil Arora, he's working at Airtel at this moment. So it's a team which is constantly diverse, and every year a president or vice president comes along, and he's outstanding. But it's not about just one or two people in IOSD. It's about every person who joins IOSD, and we work together for every of those particular person at IOSD. It's what you give back to the society that is much more important rather than okay just हमारे को क्या करना है society में हमारा खत्म खत्म हो गया. So that is what our aim is. So they get हम थोड़ा सा रैप अप यहाँ लेके आते हैं बट वी विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस राइट नाउ. ओके, बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट पुट इन द फाइनल इन्फॉर्मेशन. हाउ टू जॉइन आईओएसडी सबको वैसे तो अभी तक पता ही होना चाहिए था, मतलब काफी पब्लिक इन्फॉर्मेशन, इतने सालों से सेम ही चीज प्रोसेस हो रहा है. यू कैन जॉइन आईओएसडी ऑनलाइन ऑन द आईओएसडी's website itself. You can just fill out the form over there and put in your password and all. And it's a one-time membership fees for everything that's on. It is 1180. That is 1180 for your whole lifetime of the membership at IOSD. And you can have just interactions with every of the people over here. You can work on projects. Everything that was told is included in this 1180. And you get direct access online. The deadline for this is weekend itself. We will have the deadline as Sunday night. Then we will be having our most first and the most important event in IOSD, and that is called Dev Week. In Dev Week, we will be having classes of technology every day. So we will be having a Python class on the Monday, when we will be having a class for Android development or mobile development on Flutter on the next day. Then we will be having web development. Then we will be having AI. So we have a class on each of these technologies every day, so that you get an idea कि हाँ मेरे को एक्चुअली में करना क्या है. सब कुछ अच्छा लगता है यार. मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे लगता सब कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, फुल ऑन सब करना है मेरे को. बट यू एक्चुअली रियलाइज इन द डेव वी, ओके, व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू and what I actually want to learn.
and what is my skill set that I would be able to go with. मेरे को कोडिंग ही नहीं आती, आज तक मैंने कोडिंग ही नहीं करी, मैं तो वही फिजिकल एजुकेशन ले ली थी, तो ऑनलाइन में फिजिकल एजुकेशन मस्त करता था अपनी और मस्त निकल गया मैं. सो नहीं आता था, तो हाउ विल कोप अप. डेव वीक है भाई, डेव वीक के अंदर तुम्हारे को कोडिंग भी सिखाया जाएगा, फिर तुम्हारे को आइडिया भी दे जाएगा कि तुम्हारे को क्या करना चाहिए और आगे की एसआईटीज कैसी होगी किस किस सब्जेक्ट के अंदर और कौन कौन से सीनियर्स तुम्हारे को हर एक में है एक्चुअली में. क्योंकि आज तो तुम्हारा इंटरेक्शन दो सुपर सुपर सीनियर्स से हुआ है, ठीक है, बट यू हैव टू इंटरेक्ट विद एवरी ऑफ द सीनियर्स ओवर देयर. कोई सुपर सीनियर आएगा, कभी नॉर्मल सीनियर आएगा, कोई तुम्हारा सेकंड ईयर ही आएगा तुम्हारे को बताने कि हाँ भाई मेरे को सब आता है, मैं तोप हूँ, ठीक है. सो यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एट डिफरेंट स्टेजेस इन योर लाइफ. सो डेव वीक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. सो डेव वीक मंडे से चालू होगा, उसके पहले सारी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगी. वी विल हैव द न्यू मेंबर्स, द न्यू काउंसिल विल बी इंट्रोड्यूस टू यू एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. सो simple interaction with you guys. Go on, join in at iosd.tech/join iosd. तुम्हारे को लिंक्स भी भेज दिए जाएंगे, वो बहुत ही कॉमन है प्रोटोकॉल हमारी तरफ से भी. जस्ट जॉइन इन एंड कोई भी डाउट हो नाउ यू कैन जस्ट गो इन एंड स्टार्ट इन द कमेंट्स सेक्शन, एंड जो भी तुम्हारे को डाउट होगा, कुछ भी होगा, वी विल टेक अप एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. Okay, there is a question, how many rounds will be there for recruitment? एक ही राउंड होता है, रिक्रूटमेंट कुछ नहीं होता. IOSD के लिंक पे जाओ एंड रजिस्टर योरसेल्फ. दैट इज हाउ यू गेट इनटू IOSD. दैट्स easiest एंड द सिंपलेस्ट थिंग. इंटरव्यूज होंगे नहीं, इंटरव्यूज नहीं होंगे, एंड इसका रीज़न होता है, एंड द रीज़न हैज़ बीन क्लियरली डिफाइंड बाय कृष्णा भैया कि यार तुम लोग हो सकते हो कि यू आर फ्रॉम अ PE बैकग्राउंड, या हो सकता है तुम मेडिकल या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, जो अपना स्ट्रीम चेंज करके DTU आ रहे हो, राइट. तो वी डोंट वांट टू स्नैच अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम योर हैंड्स कि तुम हमारे सोसाइटी में नहीं आ सकते, right. We are trying to give equal opportunities to everyone, and that is why we are not conducting interviews at this point of time. Probably next year जब council decide हो रही होगी तो interviews होंगे, but not right now. काउंसिल के लिए हमेशा इंटरव्यूज होते हैं जैसे इसने बोला, बट एट दिस मोमेंट हम नहीं करते. हमने पहले किए हैं कि फर्स्ट SDD2 was formed with interviews only, but then we realized there were a lot of people that had the potential but couldn't join IOSD at this particular moment. Then they joined in the second year and they lost out on a lot of opportunities in the first year itself. And there were things that good people were lost in a place there we there could have better interactions with us. So you should have done everything at that time and you should have joined IOSD at the correct time itself. So that is what our aim is at this particular moment कि तुम आओ, तुम join करो, ठीक है. And there is a question कि does it inter with CGPA? No, it doesn't. तेरे को अपना टाइम मैनेज करना होता है. You have to interact with different people at this time. You can go and work on different things. Joining कब से होगा? मैंने registration form fill कर दिया है. You have just joined it at this particular moment, so it's something that very obvious. I told the joining is from Monday. You will be formed into WhatsApp group and you will given the information कि हाँ क्या क्या है, and you will already have the ID passwords for the portal that will be accessible for you since Monday itself, I guess. चलो ठीक प्रेमपाल है. कुमार, why so high fees? 1180 for just imagine the 4 years. तेरा प्लेसमेंट भी यार 20 लाख का भी लगता है, ठीक है. 20 लाख छोड़, मैं एवरेज ही बोलता हूँ. DTU का एवरेज 12 लाख है, ठीक है. 12 लाख के हिसाब से अगर तू 1 लाख भी कमा रहा है तो घंटे का इससे ज्यादा कमाएगा जितना तू यहाँ पे देने की सोच रहा है फॉर होल 4 years. हैव टू लुक एट इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, मैं तेरे को कैलकुलेशन यहाँ पे और नहीं बताऊँ. उस तू महीने का भाई जितने दे रहा है ना, उससे ज्यादा का कुरकुरे का पैकेट तो एक दिन में खाता है, ठीक है. सो यू कांट कंपेयर दीज थिंग्स व्हेन यू आर लुकिंग एट इन सच फॉर्मेट. अगेन इट्स lifetime value that you are getting rather than instantaneous relief from food that you are having at that moment. So you can just have this particular idea in your. So is it paid and what is the fees? It is 1180, that is the fees, and it is very cheap when you're looking forward to your career at this particular moment. ओके, देयर इज अ Then we गुड have क्वेश्चन. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले ज्वाइन कर सकते हैं? यार मजे आ गए. क्वेश्चन ही मुझे चाहिए था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है, चलो. मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हूँ, ठीक है. मैंने ज्वाइन किया था सोच के कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूंगा. फर्स्ट ईयर में नॉन टेक स्टार्ट किया, सेकेंड ईयर से वापस से टेक स्टार्ट किया. तो यू कैन स्टार्ट वेन एवर यू वॉन्ट. इट्स रिकमेंडेड कि जल्दी स्टार्ट करोगे तो जल्दी तुम्हारे पास पूरा फ्लो रहेगा.
पूरा मोमेंटम रहेगा. बट देन ऑल्सो आफ्टर 4 years अगर देखा जाए तो मेरा प्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन DTU. तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी सोसाइटी के हो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, संडे तक ऑब्वियसली ज्वाइन कर सकते हो कोई भी ब्रांच के, डजेंट मैटर उस चीज़ से. ये चीज़ होता है कि अपना फोकस रखना कोडिंग के टाइम पे या जो भी यू आर प्रेफरिंग, एंड दैट विल हेल्प यू. इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी आ सकते हैं, हर ब्रांच के बच्चे आ सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिटेशन. किसी को भी कोई भी डाउट है सो आप पूछ सकते हो, या डीएसए कवर होगा वो, यार तुम्हारा एवरीथिंग दैट इज टोल्ड इन द ओरिएंटेशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. यू कैन आस्क फॉर डाउट्स फ्रॉम योर सीनियर्स itself. Everything will be told to you, everything will be taught to you at this particular moment. You can go on and interact with every of the seniors. किसी को कोई भी डाउट हो कि कौन कहाँ पे है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं, ऑन ऑन कैंपस कैसे होती हैं, यू कैन टॉक टू दिस. लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज, let me just tell you what would be the last date. I haven't looked at it, but it's pretty obvious that Sunday 11:59 is the last date, and it is coming out to be 30th. Okay, 30th is the last. Sorry, it is coming out to be 23rd. So you have to join in by 23rd, and irrespective of branch, everything is same for everyone. And you have any more doubts, you can ask us right now. And everything is online itself at this particular moment. Once we are back on campus, everything will be shifted to offline as well. यार बच्चे मैसेज आ रहे हैं, मुझे तो कोडिंग नहीं आता, कैसे काम काम करना है यार. सीख जाओगे सबके साथ, ठीक है. किसी को कोडिंग नहीं आता मान के चलो, जो लोग बोल रहे हैं कि आई नो द बेसिक्स ऑफ दिस दिस दिस, कोई बात नहीं, बेसिक्स फिर से स्टार्ट होगा. डेव वीक इसीलिए जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्ड हो, ठीक है. What about cyber security? If enough people have interest with cyber security, we will have SIGs for cyber security as well. But enough people की बात होती है. So is the fees for 4 years? Yeah, it is. I know intermediate coding. Should I join? Yeah, everyone should join, because if you think you need coding, or if you have expertise in coding itself, then you need the projects, man. It's most important thing is projects. तेरे को कोडिंग आती है, तेरे को सी प्लस प्लस आती है, बट तेरे सीवी में कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो क्या करेगा? सीवी के क्या पार्ट्स होते हैं, एकांश प्लीज इन्हें बता दे, ठीक है. एंड देन वी विल रैप इट अप ऑन हाउ सीवी इज वेंट अराउंड, एंड वी विल ओके, रैप दिस सेशन आफ्टर दिस. तो सीवी में ना यार काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, विच इज़ वन वर्क एक्सपीरियंस, द सेकेंड इज प्रोजेक्ट्स, द थर्ड इज योर CGPA. CGPA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है. एंड द थर्ड इज अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है. ये होता है एक नॉर्मल फ्रेश ग्रेजुएट के सीवी में 4 चीज़ें. CGPA मैटर्स, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे CGPA डजेंट मैटर. CGPA इज वन ऑफ द मोस्ट जो सबसे ज़्यादा मैटर कर सकते हैं, दैट इज CGPA. द थर्ड इज वर्क, द सेकेंड इज वर्क एक्सपीरियंस. वर्क एक्सपीरियंस में इस लेवल पे जब हम लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होते हैं, तो ऑल कम्स इंटर्नशिप्स, ठीक है. तुमने इंटर्नशिप्स क्या की हैं, ठीक है, कहाँ किए हैं इंटर्नशिप्स. सेकेंड ईयर के बाद तो कॉलेज में इंटर्नशिप्स खुद से आती हैं, बट हमें 3 इंटर्नशिप्स कंप्लीट करने होते हैं, तो बाकी 2 इंटर्नशिप्स कहाँ से आ रही हैं, that is what we are talking about. So that is either you can go for IOSD's in-house internships, or you can go for IOSD के partnered organizations के साथ internships. There are a lot of people like Dev जिन्होंने internships की हुई हैं, and now he is working at Flipkart. The third part is projects, ठीक है. प्रोजेक्ट्स वो चीज़ होती हैं कि तुमने अपने 4 साल में क्या बनाया है, ठीक है. कोडिंग सबको आता है, डीएसए सब कर लेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हर बंदा कर लेगा, ठीक है. बट द थिंग इज कि तुम कर तो लोगे, तो तुम्हें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. इंटर्नशिप्स भी कर ली सबने, डीएसए भी कर लिया, सीजीपीए भी कर लिया, तो प्रोजेक्ट से पता चलता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, हाउ मच इन डेप्थ नॉलेज डू यू हैव ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक स्टैक. अगर वेब डिजाइनिंग में हो तो फ्रंट एंड में तुम्हें कितना आता है, बैक एंड में तुम्हें कितना आता है, डीबीएमएस कनेक्ट कितना करना आता है, स्कीमा कैसे बना सकते हो, दैट इज प्रोजेक्ट्स. एंड द फोर्थ इज अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स. व्हाट इज अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, कि यार तुमने 4 साल में अभी तक क्या-क्या उखाड़ा है. कोई हैकाथॉन में पार्ट लिया है तो हैव यू वन एनीथिंग, कोई कोडिंग कॉम्पिटिशन्स किए हैं तो हैव यू वन एनीथिंग. एंड दैट इज़ व्हाई टू होन दीज़ स्किल्स IOSD ऑर्गेनाइजेस दीज़ मंथली DSA चैलेंजेस एंड मॉक हैकाथॉन्स, जिससे तुम्हारे पास एक आइडिया रहे कि काम कैसे होगा, ठीक है. एंड
असली हैकाथॉन्स बाहर जाओगे तो उसमें कैसे करना है, या असली डीएसए राउंड्स जब तुम दोगे तो फिर उनके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ अ रेज्यूमे। यार ध्रुव, I see your comment is the fees for whole 4 years or per year, and we have mentioned it very clearly earlier as well. The fees is for whole 4 years. वैसे तो लाइफ टाइम होती है, but we call it 4 years. ठीक है। इज पुलिस इंटर्नशिप ऑफर्ड एवरी ईयर और नॉट? पुलिस इंटर्नशिप इज ऑफर्ड एवरी ईयर, बट द थिंग इज कि एवरी इंटर्नशिप कम्स विद कि कितना हमारे पास कंपटीशन है। सिर्फ डीटीयू को नहीं मिलता वो, एनएसयूटी को भी मिलेगा, मेट को भी मिलेगा। तो यू नीड टू शो ऑफ योर स्किल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देयर इज अ साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप विद हरियाणा पुलिस that comes up every year, which is free for everyone and anyone can apply. Okay. Yeah, I guess we will be wrapping up right now with Vedant with this. If you have any doubts, you can message any of the seniors. We'll be floating a message with the link of joining, as well as we'll be floating a message in which we have details of all the seniors you can interact, you can clear your doubts with, and then we will be having the dev week in the next coming week. And your deadline is, again, I'm telling you, deadline is 23rd. That is the Sunday, 11:59. Okay, clear your registrations by then, so that we don't have any delays for the dev week. We don't want to delay dev week anymore. We're already delayed 6 months. We used to start every of this process on the August 4th, 5th max. Now we are already in the January phase, so we are already delayed a long time. So let's hope we are not delayed further. You can directly DM your doubts to any of the contacting numbers that are already mentioned, and everything, that classes timings and everything will be around 6 and after 6. And if you have any further doubts, DM any of your seniors. Okay, so thank you so much. You can connect with Ekansh or me directly at our LinkedIn profiles. I am Krishna Rai. I am at IMB right now, and Ekansh is at Zeta. So you can find our profiles with this much information on LinkedIn. I guess my name is enough for that, but go on and look forward to it. And bye, guys. चलो बाय गाइस, एनी डाउट्स रीच आउट टू अस, बाकी वी विल एंड दिस राइट नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन।